Ladies and gentlemen, welcome to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q3 and 9 months FY24 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. If you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. Before we begin, I would like to remind all participants that some of the statements or comments made on today's call may be forward-looking in nature. These may include, but are not necessarily limited to, financial projections or other statements of the company's plan, objectives, expectations, or intentions. The company disclaims any obligation to update these forward-looking statements to reflect future events or developments. Kindly refer to slide number 17 of the earnings presentation for a detailed disclaimer. I now hand the conference over to Mr. Nitesh Pangle, Company Secretary and Compliance Officer of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. Thank you, and over to you, sir. Good evening, everyone, and we welcome all the participants to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q3 and 9 months FY 2024 earning call. Joining us today from the management side, we have Mr. Puneet Makharia, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Beriwala, Chief Financial Officer. Now, I will hand over the call to Mr. Puneet Makharia for his opening remark. Over to you, sir. Thank you, Nitish. A very good evening and a very warm welcome to everyone for Q3 and 9 months FY24 earning calls of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. I hope you all have got an opportunity to go through the financial results as well as investor presentation, which has been uploaded on the stock exchange as well as on the company's website. Friends, now I take you through the financial and operational performance of our company for Q3 and 9 months FY24. During the year, our company objective remains the efficient operation of our manufacturing plants, with a strong emphasis on maintaining sound cash flow throughout the business cycle. Rather than pursuing the rapid top-line growth and without a long-term perspective, we have adopted a measured approach, prioritizing stability over short-term gains, which have resulted very well. Our commitment to this to avoid accumulating cost inventories and managing high debt that would negatively impact our financial well-beings. All while retaining our valued customers, we have also been attentive to monitoring commodity pricing and market trends to steer through the challenges and maintaining our financial stability. I am pleased to share significant development in our operations, particularly in Ratnagiri region of Maharashtra. Our efforts have resulted in a remarkable increase in the total sale, and we are progressing in site development for our Unit 6. This strategic initiative in Ratnagiri enhances not just our capacity within fertilizer segment, but also contributes significantly to overall growth of our organization. Friends, furthermore, we are satisfied with our ongoing projects to establish 3.8 megawatt DC solar power plant in Ahmednagar district of Maharashtra. The project complements our previous strategic investment of 5.2 megawatt DC solar power plant in the same region and making it total to 9 megawatt DC, referring our commitment to sustainable energy solutions and broader environmental goals. In our chemical segment, we saw strong growth this quarter in spite of global demand softening due to economic challenges and energy crisis. Our efforts and initiatives has enabled us to maintain stability and growth. Even amidst challenges such as climate change and geopolitical tensions, currently we are operating our plants at almost full capacity, with signs of recovering indicating further production and demand of chemicals gradually increasing. Lastly, I am delighted to report that our company maintains a robust balance sheet and no-nil deposits of 95 crores, providing a strong cash position for long-term stability and sustainability. Despite the challenges circumstances of geopolitical tensions, demand pressures, global supply chain disturbances, economic downturns, and high inflation pressures, we have achieved remarkable growth. Our steadfast commitment to sustainable growth in the face of adversity has been core to our business.
Looking ahead, we are optimistic about our future and anticipating significant profitability and revenue growth improvements in the coming quarters. We remain dedicated to our goals and confident that our steadfast efforts and strategic planning will continue to yield positive outcomes. Friends, we are excited to face the challenges that lie ahead, building on the success so far. With this, I would like to pass on the baton to Mr. Deepak, our CFO, who will provide you the operational and financial highlights of Q3 and 9 months FY24. Deepak. Thank you, sir. Good evening and thank you all for joining us today. I would like to provide an overview of our operational and financial performance of the Q3 and 9 months FY24. In Q3 FY24, our consolidated volume in the chemical sector saw a remarkable 45% surge, reaching 15,875 metric tons compared to 10,969 metric tons in the same period of FY23. Similarly, the fertilizer sector observed a significant 10% increase, with the volume totaling 46,713 metric tons in Q3 FY24, up from 42,537 metric tons in Q3 FY23. This contributed to a noteworthy 17% year-on-year growth in our consolidated total volume, which amounted to 62,588 metric tons compared to 53,506 metric tons in Q3 FY23. For the first 9 months of FY24, the chemical sector continued its upward trajectory with a 31% increase in volume, reaching 45,889 metric tons compared to 35,115 metric tons in the corresponding period of FY23. However, the fertilizer sector saw a slight decline of 2%, with volume totaling 1,52,415 metric tons in 9 months FY24, down from 155,796 metric ton in 9 months FY23. Nevertheless, our consolidated total volume grew up by significant 4% year-on-year basis, amounting to 198,304 metric tons compared to 199,51 metric tons in 9 months FY23. Now turning to our financial performance in Q3 FY24, our consolidated revenue amounting to rupees 174.60 crores, marking a significant 14% increase from 153.7 crores in Q3 FY23. Our consolidated EBITDA for the same period was rupees 14 crores, reflecting a 6% growth from rupees 13.1 crores in Q3 FY23, with a robust margin of 8% in Q3 FY24. The PAT for Q3 FY24 was rupees 7.6 crores, representing a significant 49% growth from 5.1 crores in Q3 FY23, with a PAT margin of 4.3%. Moving on to the 9 months, our consolidated revenue for 9 months FY24 amounting to rupees 535.4 crores, indicating a considerable 6% growth from 503.7 crores in 9 months FY23. However, our consolidated EBITDA for 9 months FY24 decreased to rupees 41.9 crores from rupees 48 crores in 9 months FY23, making a decline of 13% year-on-year basis. The EBITDA margin for 9 months FY24 was 7.8%, with the PAT margin of 4.4%. The PAT for 9 months FY24 was reported at rupees 24 crore, reflecting a 2% decrease from 24.4 crores in 9 months FY23. With this, I would like to open the floor for any questions and discussion. Thank you, all of you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We take the first question from the line of Sanjeev Damani from SKD Consulting. Please go ahead, sir.
Sanjeev, your line is in the talk mode. Please go ahead with your question, sir. Hello. I am not getting the voice. What has happened, I don't know. Yes, sir. Please go ahead. We can hear you. It is my turn only to ask Yes, questions? sir. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. I am Sanjeev Damani. Namaskar, sir. Hello. Namaskar, Damani ji. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Please. Please go ahead. Namaste, sir. Sir, if you can kindly help me in chemical division, we consider intermediate dyes and chemical and sulfuric acid and other chemicals that we make for making dyes only, or it is chemical division means only dyes division? Sir, chemical division consists of dyes, intermediates and chemicals, and like acid division. Acid division. Like, intermediates we consume also, intermediates we sell also, as well as the acids, we consume also and we sell also. Right, sir. And this sulfuric acid, when it goes to the fertilizer division, so that will be reduced from the sale of fertilizer. Obviously, sir, we cannot capture the double sales. Right, sir. So it will. So the effect would be like that. Okay. Yeah, see, whatever the acid we consume in our fertilizer business, whatever the intermediates we consume captively in our dyes business, those quantities are never captured in the revenue figures. Right, sir. And sir, coming to the dyes chemical market, so how is the scenario of the finished dyes and how is the scenario of dyes intermediates? Sir, both are a different, we must have a viewpoint on that. The customers whom we cater in dyes intermediates, in terms you can call them our competitors also in dyes business. Because the other companies who are buying intermediates from us, they are making dyes out of that, and we are competing in the international market as well as in domestic market in terms of dyes. The only benefit what we have is that we have our own intermediates which we use captively as well as we supply to the dyes manufacturers also. Right, sir. My only question, I wanted to understand whether the dyes market are better or intermediates are better in Indian conditions and international conditions, both. Because earlier we had lot of problems, sir, of demand and all other things in international market also and in our local market also. So this quarter performance has been better, but how is the realization and how is the future view also, sir? This I want to understand. Sir, let me tell you, basically dyestuff is a value addition of dyes intermediates. And since we make intermediates as well as downstream products like acids also, so this provides complete, stable, sustainable, strength to the company and keeps company away from the market volatilities. As far as this demand and supply condition of the dyestuffs is concerned, as I mentioned in our the last con call, that markets are slowly and gradually improving. If you look at our this Q2 con call, and you can easily visualize, yes, there is a growth into the chemical business, at least in Q3, which we are significantly looking, for the stabilization, price betterment, and stability of the raw material prices as well as the demand into the finished product prices. I believe that this will continue and would be in a normal stage somewhere by the end of Q1 of next financial year. But now I don't see any, any prospectus or any chance of, further more depression into the market. I'm quite positive on the market, and which I mentioned in my last con call also. And we can see easily that the growth structure is visible in our Q3 results as far as the chemical vertical is concerned. All right, sir. Last question about the outstanding of our subsidy, the amount, if you can tell me, and secondly, how much value of sales we get out of our cattle feed item, that is diammonium phosphate or something like that, which we manufacture. Sir, DCP in Q3 on consolidated basis, we have sold 4 and 6, 4 or 6, 10, around 13 crores. 13 crores in the last 9 months. That is our... No. This I'm only telling you of for the Q3. Q3 all alone, the item which goes for cattle feed,
is worth 13 crores. 13 crores. Thank you very much. And subsidy amount, if you can reveal, outstanding subsidy to be received from government. Yes, sir, we have to dig out the figure, but we'll give it to you through our IR. That's not a problem. We are not having that figure handy with us right now. But it is. We are getting it regularly, sir. Not much a problem in real. Regularly received. There is no issues into that. Okay. Thank you very much, sir. That's so kind of you. You are obliging and I would also congratulate you for fine management and very good performance financially, operationally. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Before we take the next question, a reminder to all the participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1 on your touchtone telephone. Ladies and gentlemen, if you wish to join the question queue, you may press star and 1 on your touchtone telephone. We take the next question from the line of Praveen Agarwal, an individual investor. Please go ahead, sir. Hi, sir. My question is, first question is, could you give us the breakup of volume of the chemicals segment? Earlier we used to, bifurcate acid, which is a low value item, and dye stuff separately. Because, I can see that we are showing a lot of growth in volumes, but that is not. Praveenji, I'm sorry, I couldn't understand your question. Can you please repeat? So I'm saying, can you provide us the breakup of the chemicals into volumes for acid and dye stuff? Sir, dyes in quarter 3. Dyes and dyes intermediate in quarter 3 is 3,600 tons. Praveenji, are you listening to me? Yes, I'm listening. Okay. Dyestuffs and intermediates is all put together is 3,600 tons in quarter 3. Okay. And what would be for 9 months? What is for? Sir, what would be for 9 months? 9 months is 9,900. Okay, sir. So that's great. Sir, 9 months में 9,900, and in the past 3 months, this quarter 3, it is 3,600. So this is the figure. I have noted that down. So my second question is, I wanted to get your color on the utilization going forward for both fertilizer division as well as the chemical division. So we have a lot of capacity now. What is the current utilization? No, Mr. Praveen, your line is not properly audible, sir. Either Sorry to interrupt. Mr. Praveen, are you connected on your headphones, sir? Sir, is this better now? Yes, if you can switch to your handset, sir. Yeah. Hello? Yeah, please. Yeah, sir. So I'm saying, I wanted to get your, views on the utilization going forward, both. In terms of fertilizer and chemicals? Sir, I'm sorry, but the line from Mr. Praveen has got disconnected, sir. No problem. So we move on to the next question from the line of Saket Kapoor from Kapoor and Company. Please go ahead, sir. Namaskar, Puneet ji. And so please complete that answer. Utilization levels, आप क्या देख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया. Can you repeat the question because this line was not clearly audible. Levels going ahead also. What I could make sense from his line. What kind of levels for both the segments can we look forward? Sir, as of now, what I believe is yes, there is an improvement scope in this chemical segment. Further, I believe that there is at least improvement scope of around 12 to 15% in chemical segment. But if you talk about the fertilizer segment, particularly the fertilizer segment, I think in the next season, starting from May, June to September, things will improve, Mr. Kapoor. Okay. And sir, I think the raw materials के front पे भी fertilizer में काफी relief है, so that will aid to the margins going ahead. I believe कि raw material के front पे fertilizer में relief नहीं है. अच्छा. The reason being is this कि majority of the raw material in fertilizer is being imported, and due to the nature of the raw material is that majorly we are depending on the imports, and due to the logistic cost and tensions in the Red Sea. What we read in the various newspapers on day-to-day basis, logistic cost has gone up this tremendously. So we have to balance out not keeping high cost inventories and balancing out, looking at the market potentials,
we have to be very cautiously. Now, recently, government has reduced the subsidy also in terms of fertilizers. So, honestly speaking, and looking at this environmental issues specifically, if I talk to you in this northern India, if you remember initially in May, June, July, this entire Punjab and Haryana was under the flood, if you remember so. और अब ये नया जो सब किसानों का जो एजिटेशन वगैरह चालू है, so this is providing this is this putting lot of issues, and we are closely watching the situation. I believe that in coming few weeks, fertilizer business should be improved, and accordingly the pricing should be also stabilized, logistic cost should be also stabilized. जी सर, हम लोग 2/3 ऑफ द क्वार्टर पे हैं, नो सर हाफ ऑफ द क्वार्टर पे हैं, ऑलरेडी वी हैव डन। तो सर व्हाट वी एग्जिटेड दिसंबर, वहां से एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड मार्जिन अभी कैसा देख रहे हैं, रुझान क्या बता रहे हैं? सर देखिए, फर्टिलाइजर सेगमेंट की अगर आप बात करोगे तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बोलूं, मैं कोई बहुत ज्यादा विजिबिलिटी इन 1.5 महीनों में ये Q4 में मैं फर्टिलाइजर बिजनेस में नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ये सीजन अब है नहीं। ये सीजन में जो भी प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्पैचेस होने हैं वो अगले सीजन के प्लेसमेंट के लिए होने हैं। अगले सीजन के प्लेसमेंट के अंदर अब सरकार की नई सब्सिडी पॉलिसी क्या आती है, जो कि आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बट अगर आप मेरे से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली और एक ऑनेस्ट अगर आप मेरे से इसके ऊपर अगर आप आंसर चाहते हो, तो आई वुड नॉट लाइक टू बी वेरी दिस थिंग, मतलब मुझे ये जो Q4 है जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरे को ये फर्टिलाइजर के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जो चल रहा है मुझे उससे कोई सुधार की उम्मीद भी इस क्वार्टर में नहीं है जी। और केमिकल के विषय में सर क्या रुझान है? आई बिलीव इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। केमिकल हैज ऑलरेडी कम टू इम्प्रूवमेंट स्टेज विच इज दिस विजिबल इन अवर लास्ट रिजल्ट्स ऑल्सो। और आने वाले समय में भी मैं जो केमिकल बिजनेस को देख पा रहा हूँ, I see that there is a good amount of demand and growth, and as well as prices have also started improving. Demand has started coming in. The same phase will come for even the fertilizers also. Probably not in this quarter, maybe in the this first quarter of next year. सर, जैसे आपने प्रेजेंटेशन में भी और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी मेंशन किया था, रत्नागिरी वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा 106 करोड़ रुपए का, सर इस प्रोजेक्ट से हमारी क्या कैपेसिटी ऑगमेंट, व्हाट कैपेसिटी वुड बी ऑगमेंटेड, एंड व्हाट काइंड ऑफ टर्नओवर रेशियो द केमिकल मिक्स गोइंग टू बी, सर, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू कंप्लीट द कैपेक्स? देखिए, ये कैपेक्स 2 अलग अलग सेगमेंट में है। एक केमिकल का सेगमेंट है, एक फर्टिलाइजर का सेगमेंट है, एंड दीज बोथ द कैपेक्सेस विल बी इम्प्रूविंग in part of the backward integration, for which we already have 6 stages backward forward integrated. This would be the 7th stage of the backward forward integration. Another is towards the fertilizers, and this new fertilizer expansion will totally this turn around the face of the company, will this totally turn around the image of the company. एंड अगर आप टॉप लाइन की बात करेंगे तो जैसे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसकी तो मैं सेल्स रेवेन्यू को कुछ गिनता नहीं हूँ, बिकॉज वो गिन के कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट का जो बात करूँ तो कहीं ना कहीं यूनिट 6 से 400 करोड़ रुपए की टॉप लाइन ग्रोथ मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट 65-70% यूटिलाइजेशन इन द फर्स्ट ईयर। ओके, और सर ये कब तक कमीशन हो जाएगा ये कैपेक्स? सर इसको लगेगा, ये थोड़ा बड़ा कैपेक्स है, बड़ा काम है सर, ये बड़ा वो है, इसको कहीं ना कहीं सर 1.25 साल तो लग ही जाएगा, आप समझ के चलो। हमारी कोशिश रहेगी मार्च 25 तक करने की, बाकी लेट्स सी द टाइम विल टेल सर, बिकॉज सी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अवर फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स ऑफ 175 करोड़ फ्रॉम इंटरनल अप्रूवल, नाउ वी आर टेकन अप ए न्यू कैपेक्स, दैट टू ऑल्सो हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि भाई इसको भी हम जहां तक हो सके इंटरनल अप्रूवल्स के तौर पे इसको कंप्लीट करें। कंपनी के पास आज की तारीख में भी एज ऑन डेट में अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास रुपए के नॉन इन इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं। 1.25 साल 1.5 साल का अपने हाथ में टाइम है, कोई मतलब टर्म लोन कंपनी के ऊपर है नहीं, कोई लोन वोन कंपनी के ऊपर है नहीं, तो वी बिलीव कि आने वाले 1.25 साल के अंदर कंपनी वुड बी इजीली शुड बी एबल टू जनरेट
sufficient amount of money. Plus, promoter has also placed a 15 crores warrant also towards the same expansion. तो 115 तो यही हो गए हैं. अब बाकी सवा साल में कंपनी जनरेट कर लेगी और कल को बाद में देखेंगे कुछ अगर छोटा मोटा किधर को बैलेंस आउट करना पड़ेगा तब देखेंगे. मतलब सर प्रयास ये रहेगा कि ये जो नया सेकंड फेज का कैपेक्स है इसको भी हम इंटरनल अप्रूवल से कंप्लीट करें. ओके, तो मतलब सर ये हम लोग इस साल में ये 95 से 100 करोड़ रुपया कैपेक्स में डाल देंगे ये 5 नंबर यूनिट के लिए. वो बोलना मुश्किल है. वो तो देखिए जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी काम की वैसे वैसे होता जाएगा. बट पैसे के लिए कोई काम रुकने का की कोई संभावना नहीं है. नहीं सर, मेरा तात्पर्य ये है कि सर आप क्या फैक्टर्स देखेंगे जिससे आप कैपेक्स आप एक टाइम बाउंड मैनर में ही कंप्लीट करेंगे. 9 साल का टारगेट है. अब जैसे जैसे 95 करोड़ ये साल में तो लगने का सवाल ही नहीं है सर. सिंपल चीज है. 106 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, कहाँ 90% पैसा तुरंत लग जाएगा. जो आज मशीनों के भी आप पैसे देते हो तो कौन सा पूरा पैसा दे देते हो. एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ट्रायल के बाद ही पूरा पैसा रिलीज करते हो. एंड प्लस कंपनी वुड बी जनरेटिंग एडिशनल कैश ऑल्सो ड्यूरिंग द दिस ऑपरेशनल नेक्स्ट ईयर. सही. तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये कैपेक्स कंप्लीट होने से इट विल बी अ गेम चेंजिंग एस्पेक्ट फॉर द कंपनी. तो सर जो हमारे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ करते थे हिस्टोरिकली, जैसे अभी हम एक डिप देख रहे हैं ओवरऑल में बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन. तो किस ट्रेजेक्ट्री में सर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को आई थिंक ये जो आप पूछना चाह रहे हो, आई एम श्योर दैट वी विल कम बैक टू अवर ओल्ड टाइम्स wherein 14% से 16% तक का EBITDA levels and in a range of around 10% के आसपास का PAT levels. I clearly have a vision to see in next financial year. अच्छा सर, मतलब जो अभी हम 5.5% पे इस क्वार्टर पे हैं. देखिए ये 5.5% को अपन इतिहास बना के नहीं चल सकते. ये समय अलग है और आई बिलीव इन ए कंजर्वेटिव अप्रोच. कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ अच्छा करना होता है. कभी कभी धीरे चलना भी बहुत अच्छा होता है. जी पुनीत साहब, मैं सहमत हूँ आपसे. और आपने आगे भी 2 क्वार्टर पहले बताया था कि हम बॉटम में हैं और यहाँ से नंबर्स हमारे अब वीक नहीं रहेंगे. और वैसा दिख रहा है सर कि सारे रुझान नेगेटिव के होने पर भी वी आर रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ नंबर्स. नॉट सर मैं आपको अगर इसके अंदर और एक चीज समझाने का की कोशिश करूं कि देखो फर्टिलाइजर सेगमेंट इम्प्रूवमेंट, सॉरी केमिकल सेगमेंट इम्प्रूवमेंट पे है, फर्टिलाइजर सेगमेंट डिप की तरफ है. ठीक है सर. अगर आप बाकी दूसरे कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर्स देखोगे उनके अंदर सबके अंदर नेगेटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा. वेरिन अपने अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है. भले ही एक डिप है कंपेयर टू द लास्ट पीरियड. और बहुत संभल के चलना पड़ता है कपूर साहब, बहुत देख के चलना पड़ता है. आई बिलीव इन ए वन स्ट्रेटेजी दैट वन रॉन्ग डिसीजन इन बिजनेस में कीप यू आउट ऑफ द बिजनेस फॉर एवर. ठीक है. तो बहुत मेहनत से धंधा बिल्ड किया है. अगर अभी समय ठीक नहीं है तो थोड़े से जरा कॉशियसली चले. जी सर. तो 2 प्रश्न करके मैं लाइन में आऊंगा. पहला था कि सर इस साल की जो हम टॉप लाइन देख रहे हैं 9 महीने की, उसमें एक माइनर ग्रोथ है. तो एंड ऑफ द ईयर जैसे आप अभी जो रुझान बता रहे हैं वी विल बी क्लोजर. मैंने ये जो परसेंटेज गेन है 9 महीने का, ये मेंटेन कर सकेंगे इस ट्रैक्शन को फॉर द ईयर एज अ होल. तो देखिए मुझे लगता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में समवेयर वी शुड बी 725 प्लस. ओके. ऑन कंसोलिडेटेड लेवल. ऑन कंसोलिडेटेड लेवल. अच्छा. और जो मार्जिन प्रोफाइल हमने अभी 9 महीने में रखी है उसको सर इसमें कोई चेंज ज्यादा होने वाला नहीं है. कोई आप समझ के चल लो. कोई बहुत आसमान सुल्तान कुछ होने वाला नहीं है सर. थोड़ा बहुत तो देखो समय बताएगा, मैं आज बोल नहीं सकता. बट आई डोंट सी स्लिपिंग इट डाउन फॉरवर्ड. एक रिक्वेस्ट है साहब, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे नंबर्स ये एकदम फैग एंड में आ रहे हैं 13-14 तारीख, जैसे जब क्वार्टर एंड होते हैं. मैंने एकदम लास्ट जैसे कल परसों लास्ट रहेगा विंडो क्लोज इसके लिए. तो हमारे सीएफओ सामने बैठे हैं, इनको बोलो. सीएफओ साहब प्रश्न आपकी तरफ है कि सर हम अपने नंबर्स को क्वार्टर एंड होने के 20-25 दिन या मैक्सिमम बाय 30 डेज लाने का सर प्रस्ताव रखता हूं कि इससे इन्वेस्टर्स के प्रति रुझान भी अच्छा बनेगा. प्लस सर ये फैग एंड वाले में काफी रश हो जाता है.
जो कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो, उसी दिशा में हम लोग हर बार कोशिश कर रहे हैं. आई एम श्योर we'll be able to do as per the expectations at least in the next quarter. मैं इनको यही बोलता हूँ, मैंने कहा भैया काहे अपने को एकदम लास्ट टाइम पे जाने का है, लेट्स डू इट बिफोर. जी साहब, बहुत रश हो जाता है सर. और आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है सर, आपके लिए ये ब्रैकेट है ही नहीं, तो आप काइंडली इसको रिव्यू कीजिए. बिल्कुल धन्यवाद रखता हूँ सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. A reminder to all the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, you may press star and one. The next question is from the line of Praveen Agarwal, an individual investor. Please go ahead, sir. हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. बात नहीं प्रवीण जी, बताइए. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अपनी जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है बोथ इन दी केमिकल्स डिवीजन एज वेल एज फर्टिलाइजर डिवीजन, वो अभी फिलहाल कितना होगा? सर देखो, केमिकल डिवीजन कहीं ना कहीं 65 से 70% पे है और फर्टिलाइजर डिवीजन आज की तारीख में ऑलमोस्ट अराउंड 40% पे है सर. एंड सर, ये अपने नेक्स्ट ईयर 2 इयर्स के बेसिस पे क्या यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं? सर देखिए, केमिकल के अंदर आई बिलीव कि कहीं ना कहीं इसके अंदर 10% ग्रोथ का स्कोप है और फर्टिलाइजर के अंदर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 20-25% ग्रोथ का स्कोप है सर इसके अंदर. सर ये नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बोल रहे हैं या वो 2 इयर्स? नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ सर. ठीक है सर. सर मैं ये यूनिट 6 की जो आप बात कर रहे थे वो मैंने थोड़ा सुना, मैं थोड़ा मिस कर दिया. ये सर ये जो यूनिट 6 है ये किसको फीड करेगा? ये अपने फर्टिलाइजर डिवीजन को फीड करेगा या अपने केमिकल डिवीजन को फीड करेगा? बेसिकली पुष्कर में 2 प्रकार के एक्सपेंशन आ रहे हैं. एक केमिकल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आ रहा है, एक फॉरवर्ड एक फर्टिलाइजर बिजनेस में आ रहा है. तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है दैट विल सपोर्ट अवर एग्जिस्टिंग बिजनेस विच विल बी प्रोड्यूसिंग अवर ओन रॉ मटेरियल्स फॉर दैट. और जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में आ रहा है दैट विल बी कैटरिंग टू द इन द मार्केट. ये दोनों यूनिट 6 में दोनों हो रहे हैं. द वन जो आप बता रहे थे कि यूनिट 5 में ही आ रहा है, एक यूनिट 6 में आ रहा है. एक यूनिट 5 में आ रहा है प्रवीण जी. हेलो हेलो. Sir, his line is got disconnected again. Ladies and gentlemen, that was the last question for the day. I would now like to hand the conference over to Mr. Puneet Makharia for closing comments. Thank you everyone for joining our Q3 and 9 months FY24 earning calls. If you have any further questions, please feel free to connect with our investor relation advisor, Churchgate Partners, and we'll be happy to address all your queries. Thank you very much. Have a safe day. Thank you. On behalf of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.